Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 5 and the name of our chapter is Physical and Chemical Changes of Matter. So my dear students, today we are going to discuss about boiling and condensation of water. हमने previous lecture में water को as an example करके freezing और melting point के बारे में discuss किया था. Today we are going to discuss about boiling and condensation. So my dear students, now let's quickly move forward towards the recap. So what is melting point? The temperature at which solid turns into liquid is called its melting point. What is freezing point? The temperature at which liquid turns into solid ice or freezes is called its freezing point. So now it's time for an activity. Look at this. When it rains, आपने देखें इस पिक्चर को अच्छी तरह, यहाँ पे बारिश हो रही है और बारिश की वजह से आप देख सकते हैं कि सड़क पे पानी इकट्ठा हो गया है. इसके अलावा अक्सर छोटी छोटी जगहों पे आपको नजर आता है कि पानी इकट्ठा हो जाता है और थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और सूरज निकल आता है. So ये पिक्चर आपको दिखाने का मकसद ये है कि जल्दी से अब आपने सोचना ये है कि do you observe after rain some water remains on roads or streets, but after 1 or 2 days it disappears. Where does it go? So ये पानी जो है कुछ दिनों के बाद, 1 या 2 दिन के बाद आप नोटिस करते हैं कि वो पानी जो है वो खत्म हो गया, गायब हो गया, ड्राई आउट हो गया. Where does it go? अच्छा, ड्राई हो जाता है तो ड्राई होके जाता किधर है? ओके, मैं आपको बताती हूं. कुछ पानी जो है वो जमीन के नीचे चला जाता है, पानी जो है मिट्टी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है. कुछ पानी जो है सूरज की गर्मी की वजह से हवा में बुखारात की शक्ल में एवापोरेट होके वाटर वेपर्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी कि इट बिकम्स गैस और वो हवा का हिस्सा बन जाता है. सो इस तरह से पानी जो है वो अपनी स्टेट जो है वो चेंज कर लेता है. Okay, my dear students. Now let's quickly look at the student learning outcome. Describe and demonstrate the states of water: melting, freezing, evaporation, and condensation. Okay, now the pre-reading questions. Let's quickly move forward towards the pre-reading question. So quickly tell me that what happened to the water when we leave it uncovered in sunlight. So my dear students, जब आप सूरज की रोशनी में पानी को खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है? It changes into gas, water vapors. Okay, now tell me, from where does water come from outside the glass filled with ice cubes? जब आप ठंडा यख पानी लेते हैं, बॉटल के अंदर होता है, चिल्ड वाटर बॉटल होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है या कोई भी चीज होती है, थोड़ी देर बाद आप नोटिस करते हैं वो बाहर से गीली हो जाती है. उसके आउटसाइड उसकी जो होती है लेयर जो होती है, बॉटल होती है या ग्लास होता है, उसके ऊपर पानी आ जाता है. वो कहां से आता है? सोचें, ये आप पढ़ चुके हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट इन द प्रीवियस क्लासेस. वेयर डज इट कम फ्रॉम? इट कम्स फ्रॉम द एयर. हवा में जो पानी है जब वो ठंडी सतह से टकराता है तो वो क्या हो जाता है? वो पानी की शक्ल इख्तियार कर लेता है. अभी हम इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे आगे चल के इसी लेक्चर में. बट बिफोर दैट लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रीडिंग. सो फॉर दैट क्विकली ओपन पेज नंबर 69 इन योर साइंस 5 बुक्स. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Boiling and condensation. You might have observed that if you leave water uncovered in sunlight on a sunny day, it soon disappears. Where does the water go? How does it happen? The water goes into the air. So how does it happen? ये कैसे होता है? The water absorbs the heat of the sun. जो पानी है वो सूरज की गर्मी को absorb करता है, जिसकी वजह से as I told you, the particles inside the water, they start to move very fast and they move far apart from each other and turn into water vapors or gas. The particles of water become warmer and begin to escape into the air. Hence, the liquid is converted into gas. Water in the form of gas is called water vapors. यानी कि पानी जब गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो हम उसको बुखारात या water vapors कहते हैं. Okay, my dear students, now this is the reason when you boil water
or any other liquid, the particles of that liquid move more rapidly and escape into the air. This process is called boiling. The temperature at which a liquid changes into its vapors is called its boiling point. So my dear students, तभी जब भी आप किसी चीज को बॉयल करते हैं, उसको हीट अप करते हैं, जैसे कि दूध है या पानी है, आप इनको जब हीट अप करते हैं, आग के ऊपर रखते हैं, तो क्या होता है, कुछ देर के बाद the particles start to move very fast and escape into the air. They change into gas, and the point at which the liquid changes into gas, it's called its boiling point. आप ये नोट करें कि अगर पानी को बहुत देर के लिए हीट किया जाए, वो बॉयल होता रहे, तो आप नोट करेंगे पानी कम होता जा रहा है, तो वो कहां चला जाता है, इट escapes into the air, turns into gas. Okay. On the other hand, when water vapors of any liquid cool down, तो अगर water vapors जो है उनको cool down किया जाए, the motion of their particles becomes slow and the gas again changes into liquid state. The temperature at which a gas changes into liquid state is called its condensation point. So my dear students, इसी तरह अगर गैस को या water vapors को ठंडा किया जाए, वो बहुत ज्यादा ठंडे हो जाएं, तो क्या होता है कि वो दोबारा गैस से उनके जो पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, उनकी जो एनर्जी उन्होंने इतनी अब्सॉर्ब की हुई है, दे रिलीज द एनर्जी एंड दे स्टार्ट टू मूव स्लो, और एक दूसरे के थोड़े करीब आ जाते हैं, एंड दे अगेन टर्न टू वाटर, एंड द टेम्परेचर एट विच द गैस टर्न्स बैक इनटू द लिक्विड, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स कंडेंसेशन पॉइंट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से जब बारिश होती है, तो जब ठंडी गैस जो है वो इसी तरीके से होता है कि बुखारात जो हैं वो जब किसी ठंडी जगह से गुजरते हैं, तो दे टर्न इनटू रेन ड्रॉपलेट्स, और इसी तरह से जो है वो बारिश बरसती है. तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और आपको अभी मैं इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊंगी कि कैसे जो है कंडेंसेशन होती है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो हियर यू कैन सी द वाटर इज बॉइलिंग. So the particles of the water, they have gained the energy, they have absorbed the energy, and they have started to move very fast, and then they escape into the air and turn into gas, water vapors, and this is called their boiling point. So water boils at 100 degrees centigrade. Keep this in mind. So this is boiling water, very hot, and you can see it is going into the air in the form of water vapors, gas. So evaporation, when they move very fast and escape into the air, so this is evaporation. इसी तरह से boiling में भी यही होता है कि जो water के particles हैं, they gain the energy and they move into the air. Evaporation जो है, it is a slow process, यानी कि जो natural evaporation होती है in the presence of sunlight. Whereas boiling जो कि heat के ऊपर की जाती है, it is a very fast process. इसमें पानी जो है वो जल्दी से evaporate हो जाता है. So gas when absorbs, so gas when releases energy and slows down, this is called condensation, it changes into water. And when liquid gains energy and at a very high temperature, it turns into gas. So now let's do the experiment, condensation of water in air. Okay, the material that is required is empty clear glass, ice cold water or ice cubes. So the procedure is dry the outer surface of the glass thoroughly, pour ice cold water on alternatively add ice cubes to the glass. Observe the outer surface of the glass. Observation, what did you observe? Conclusion, where did the water droplets come from? So my dear students, now let's quickly do the experiment. So here you can see a glass full of cold water and ice, and you can see small droplets of water outside on the surface of the glass. So मैंने आपके लिए यहाँ क्या किया, मैंने एक ग्लास लिया, बिल्कुल साफ सुथरा था, खुश्क था, एंड आफ्टर मैंने उसके अंदर आइस कोल्ड वाटर और जो है वो बर्फ डाली, एंड यू कैन सी दैट इट हैज वाटर on the outer surface. You can see my hands get wet when I touch it. So where does this water come from? ये पानी ये कहाँ से आता है? Actually जो हवा इसके इर्द गिर्द है, जब वो इस ग्लास के साथ टकराती है, तो इस हवा में वाटर वेपर्स भी हैं. तो वो वाटर वेपर्स उन्होंने एनर्जी गेन की हुई होती है, तो जैसे ही वो ठंडी सरफेस से टकराते हैं, वो एनर्जी लूज करते हैं अपनी और स्लो मूव करते हैं, और क्या होता है, दे टर्न बैक इनटू वाटर.
and this process is called condensation. The turning back of gas into water is called condensation. So ये condensation की वजह से जो है आपको water droplets जो हैं glass के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं. If you want to see a bigger picture, so here's the picture where you can observe condensation on the glass. So now is the time for evaluation. So where do liquids go when we put them uncovered on stove for a long time? So my dear students, अगर आप liquids को uncover छोड़ें और बहुत देर तक वो आग पे रखे रहें तो वो पानी कहाँ चला जाता है? It evaporates, into gas and goes into the air. What is boiling point? The temperature at which a liquid turns into gas is called its boiling point. The boiling point of water is 100 degrees centigrade. For water, it is 100 degree. What is evaporation? When the gas turns into water vapors, when water evaporates into the air, this is called evaporation. How does gas again changes into liquid? So it is the process called condensation through which gas changes back into liquid. So now is the time for practice, for which you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and the roll number. Identify what is happening. Write the name of the process. Water droplets on leaves, that is condensation. Water droplets on leaves, that is water boils at 100 degrees centigrade, that is boiling. Butter on hot slice, melting. Water droplets on windows, condensation. Rain water disappeared, evaporation. Water pot on stove starts bubbling, that is again boiling. Appearing fog on lakes, that is condensation. Okay, my dear students, now what is boiling point? What is evaporation? Give example. What is condensation? Give example. Okay, my dear students, you will complete the worksheet, and the homework for today is question number 9, boiling point, section B, page number 75, and you will also do question number 2, boiling and condensation, section C, page number 75. So my dear students, now is the time for wrap up. So today we have learned that when we boil liquids, their particles move rapidly and start to escape in air. The temperature at which this happens is called the boiling point, whereas the change of liquid into vapors is called evaporation. When gas is cooled down, its particles movement becomes slow and the gas changes into liquid. This is called condensation. So my dear students, आज हमने water की 2 more जो states जैसे वो change करता है, जैसे हमने melting और freezing पढ़ी थी, आज हमने boiling और condensation पढ़ी. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much.